Good afternoon, everybody. I'm getting ready with my components for demonstration, and today's presentation is on dissection of an alternating current motor and study of its functioning and the science behind that. Those who have joined, please mention your names if possible on the chat box so that I will interact with you. And the assembly of a 200-watt pedestal fan motor is already open. Only thing is that if you are really interested, you may write your suggestions and questions on your chart, and I will observe what are the questions coming to your mind regarding today's demonstration. Because I have already said repeatedly, only I will demonstrate, and that will be recorded for future program. Maybe one way it is good, but from the live point of view, we get a little bit of discomfort in our heart and mind that our online viewers are not enjoying properly. That is what I suggest all of you to write as far as possible whatever doubt comes to your mind. Whatever you are observing here, it is just the dissected model. I just show you to create your fascination. A syringe with me. I will use this syringe today for all of you to watch the basic science of the AC motor. Remember, for every technology, there is a basic science. And if you want to be a master of the technology, first you have to know what is the science behind that. So, what is that science? I will show you because this particular component which I have taken out is the responsible component that rotates inside this cavity. And this is very bulky, heavy, with a very powerful shaft. It is made up of iron, and this is called the rotor. You see, the design of the rotor is like this. In the front and in the back, there are two aluminum discs attached to the iron core, and the iron core is the heaviest part of this component. And this is posted on this particular hole with a bush. So it will go like that. It will go like that. And it will be inside the core assembly of the coil setup. Now I removed it, but again I inserted it to show you that if you observe minutely,
The gap available between the rotor and the core of the coil assembly cannot be seen by naked eye. And this is in the definition of technical language hair gap. So let us remove it and then we will see what are the important observations we are making today. So this I remove now because this has got no electrical connection for rotation. This is a big mystery. The portion which is rotating has got no electrical connectivity for our observation. It is just to rotate. And I told repeatedly, I repeat again, these two aluminum pieces are responsible for the rotation inside the core assembly. Now, what science I want to present for all of you, those who are available here, I have got a syringe for testing and I have got a magnet here. You could see this magnet gets linked to iron. Let us verify first whether it is a magnet or not. So this is confirmed that this is a magnet I am using. So what I am doing, I keep it inside this syringe and then let me close it or may not be. I keep it here inside this cavity of the core, which gets attracted to the iron core assembly. You can see everywhere it is getting attracted because it is a magnet and there are iron cores. But the moment I allow the current to flow in the coil assembly, you'll find this particular magnet. What is the result? Let us first observe. This is vibrating, jumping up and down. And now in the motor assembly, we are having a beautiful component which is called a capacitor. And this capacitor has got a value. If you want to read also, you can read. Can you read it? This is, I think, 4 microfarad written. Here it is written 4 microfarad. And voltage factor is 440 volt. And frequency is 50 hertz. So what is the capacitor? Basically, we'll discuss later on, but it stores energy. And I have got a point in the motor which is having two wires coming out for connection to the capacitor. So what I am doing before all of you, I connect one point got connected, another point got connected. So the capacitor has been connected to the appropriate point inside the coil assembly. This I just wanted to show you that I have connected the capacitor and then what I am doing, I place again and if you could observe through camera, either observe or listen to the sound when I power it on the coil assembly, the behavior of the magnet will be totally changed. You could see my hand vibrating, but this time
This is not simply vibrating, this is rotating in speed. Imagine a magnet rotating inside the coil cavity is a very interesting observation for all of us. I stop it because this particular portion will be getting gradually hot if you do not provide the rotor to be present inside that. So, what I could show you, you might have enjoyed, but one thing I will show you again, and that one is beautiful, tremendous. The arrangement you look past. These are all house arrangements. I had got a copper container for puja purposes. It is used, so I had it. So it came to my mind, let me use it to see the effect of science. Here is a bearing and shaft, and there is a glass pipe rather. So what I have done, I have inserted here little tight by my packing paper. So what I will be doing for all of you to see, I will be holding it like this inside this cavity, but I will not keep it. I will not make it rest on the floor. I will suspend it. But this being a copper all along, you will observe there will be no electrical attraction. So let me power on before all of you, and you just see, हाँ भैया, MPL भैया, यू आर प्रेजेंट, आई एम हैप्पी. आप देखिए जरा कितना बढ़िया है आइटम. इसी इससे बढ़कर कोई साइंस आई नेवर सॉ इन माय साइंस कैरियर. क्या हो रहा है आप लोग देख पा रहे हैं, बट दुख की बात है कोई नहीं है देखने के लिए. सो यू जस्ट सी this container which is made up of copper is rotating. शानदार रोटेशन हो रहा है, और जिस जगह में रोटर को घूमना चाहिए उस जगह में my copper container is rotating. This is one of the finest demonstration of science to explain the concept of AC motor. अब जरा देख लीजिए, ठंडा मिजाज में कॉपर का एक गड्ढू जो मंदिर में होना चाहिए, जो ठाकुर के लिए होना चाहिए, वो भी मेरे लिए साइंस का इस्तेमाल हो रहा है. I have kept suspended by a bearing and a rod inside the cavity of the AC motor, and I am showing you that इससे बढ़कर खुशी मेरे को जिंदगी में नहीं हुई थी, क्योंकि ये अचानक हो गया. I never dreamed of. So this rotates as long as your power, your current will flow in the coil assembly. So this is the science. थोड़ा सा मामूली वार्म है और ये ज़्यादा गर्म है, इससे हीट निकल रहा है. And that is why when fans are running, the body is garam, body is hot. But the reality is like this, for getting them cooled, we should not hesitate actually. We should have proper ventilation, but this particular arrangement, I have never seen such a good ventilation going in and taking the heat out. Anyway, काफ़ी सारे लोग जुड़ गए हैं, और भगवान जी भी है हमारे साथ, वो खुद भगवान जी है मेरे साथ, और MPL भैया है, और कोई है, नो प्रॉब्लम. सो आप ज़रा देखिए अरेंजमेंट क्या है, कैसे इनोवेशन किया गया है. Yesterday I had uploaded it in my short video section, you can see, but this glass pipe I did not get the idea. Night only I got the idea, and morning I got ready
to show my online viewers that this is not blocking the view. At least whoever will be watching through camera will be watching the details that this is rotating inside this cavity where our rotor should be rotating. I repeat you again, this rotor, such a heavy concept, it is a heavy component, it should be placed in there itself like this. Remember, and if you take it inside, you will find that goes. But the gap itna kam hai, if you give it inside, fit it inside and give power, this body, the surrounding iron cores will attract and they will be attracting it and it will not rotate. So my question goes to all of you. If you are having little interest, think अगर ये सही है, लग जाता है कोर में मैग्नेटिक एक्शन से, तो फिर हम जब फिटिंग करते हैं तब कैसे घूमता है इतना जोर से? How does it rotate so fast when the body, the cabinet is fitted exactly, tightly? That I will discuss in the next program when we go to the depth of the analysis, because this is the introduction of the analysis, AC motor functioning, its components, and the science behind that. Remember, one portion I have shifted outside here itself. I may show it side from side. You can see this particular portion through which the shaft will be passing through will be fitted to the body here only. And when we fit, the fitting process also needs a skill. Otherwise, anybody just making the screws tight will find ultimately that the rotor is not rotating. And now, one thing I have to point out, please, this motor started running because of this capacitor. I will show you, I will prove you now. What I'll do, I will remove these two connecting points from the connector. See, while removing the capacitor, you have to be very careful, otherwise, sometimes we get shock. How? See, suppose there is charge, then you have to discharge first by touching both the terminals. Otherwise, by mistake, suppose you touch it. Now I can touch it, no problem. But if there is charge and you touch it, then you get a jhatka. So now my action is to show you without the condenser or capacitor getting connected to the system, if we place it, this copper container, inside that, let us see whether it rotates or not. But the rotor will not rotate, that I am sure. But what about this container? I will be watching it also for the first time. No rotation. But I could feel something is vibrating me, but it is not rotating. Again, observe carefully. I remove my hand. Through the camera, you see the setup is already inside, suspended. But if I give power, you just listen, there will be a slight humming sound, but not rotating. So, my question goes to all my viewers. If this is a fact we could observe, then what might be the reason or what might be the need of the capacitor in all alternating current motors? Now I connect again, you just see. For showing you that after connecting, we'll have again another round test. So this is connected. Let me hang it and I switch it on, and you are requested to see the impact. Nice.
इससे बेहतर कोई आनंद नहीं मिल सकता है हम लोग को, क्योंकि साइंस इज फैसिनेटिंग, दैट इज माय स्लोगन। इन माय बैनर आई हैव रिटन साइंस इज फैसिनेटिंग बाय माय नेम, हिमांशु शेखर। सो आप लोग को ये रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं आपके ग्रुप में, कोई स्टूडेंट ग्रुप को या टीचर ग्रुप को, तो जरा सा ध्यान रखिए, जो कॉमन मिनिमम थिंग्स आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू यू हैव टू फॉलो। और अंदर कोई अगर चीज घूम रहा है तो देखिए, कंटेनर अगर फिटिंग हो जाएगा, ये बॉडी हम लोग रोटेशन देख नहीं पा रहे हैं, केवल शाफ्ट को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ हम खुद सबको देख रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी एक मजा का चीज है, इफ आई प्लेस इट on the container surface and hold it, it will not rotate because of its weight. That is why I got it suspended. And when you suspend it, you could feel very little friction and the system will operate if there is a truth. It is beautiful. See, every time I tell you this container rotates this direction, never this direction. You can check. So this is the beauty of the connection pattern. You know, in all AC motors, if somebody is expert and he will connect it in another way, it will move the other way. So that means this way it will rotate. बट ये लोग ऐसा डिजाइन किया है, जिस डायरेक्शन में घूमना चाहिए ताकि आपको हवा मिले, उसी डायरेक्शन में ये लोग को घूमना है. So this is the idea, and you know we call it another beautiful demonstration I want to show you. आप लोग जुड़ गए हैं, अभी देखिए जरा, एक मैग्नेट है मेरे पास और वो मैग्नेट हम इसके अंदर डालते हैं एक सीरीज पाइप के अंदर, और इसको ऊपर से दे देते हैं. देखिए कितना दे देते हैं, थोड़ा नीचे ले जाता हूँ ताकि एक मैग्नेट को जितना स्पेस चाहिए उतना मिले. Now what I am doing, I keep it inside this cavity and then I allow the current, and you see this is getting attracted by magnetic attraction. But when I give power, you will observe the sound first and then think, what is that sound? You can see my hand is vibrating because of the rotation of the magnet inside that series. And I have uploaded again today 1:30 p.m. a small magnet moving inside a glass pipe which was kept inside. You can check that. And यहाँ मैंने आपके लिए इतना दिखाया क्योंकि थोड़ा बड़ा मैग्नेट लिया, और वो बड़ा मैग्नेट ग्लास ट्यूब के अंदर अगर घूमता है तो ग्लास ट्यूब क्रैक कर सकता है. इसीलिए नोइंगली मैंने सीरीज को अपनाया और आपको दिखाया कि इतना बड़ा मैग्नेट इसके अंदर घूम रहा है, इतना जोर घूम रहा है ताकि मेरा हैंड वाइब्रेशन हो रहा है, ऐसा लचीला हो रहा है, ऐसा हो रहा है. So that was the idea how AC motor operates, and the scientific principle behind this is when you connect the capacitor inside this coil assembly, there are two sets of coil. दो सेट है, आप देख रहे हैं टोटल सारे कॉइल है, बट इफ यू एनालाइज इंटरनली दे आर हैविंग टू सेट्स. 8 करके एक सेट है. One set means 8 coils all along, and the second set contains again 8 coils all along, posted on iron core. स्लॉट के अंदर टाइट किया गया है और ये जोन को फ्री किया गया है ताकि रोटर बैठे. अब क्वेश्चन ये रहा है, दोनों कॉइल में जब कनेक्शन हो जाएगा, एक कॉइल डायरेक्ट कनेक्शन में जाएगा और एक सेट कैपेसिटर के थ्रू जाएगा.
और ये कैपेसिटर के कारण इसके अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, जिसको हमारा मैग्नेट प्रूव कर रहा है। And because of that rotating magnetic field, our own magnet also rotates in that speed. And with that speed, your rotor also rotates inside this cavity. और अगर इसके बात करें तो वो भी वही स्पीड में हो रहा है, लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि गैप ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि हेयर गैप जो मैंने आपको बोला है, ये ज़्यादा गैप हो रहा है, इसीलिए थोड़ा घूम रहा है तो अच्छा है, लेकिन ये भी वही ढंग से घूम रहा है, कोई कम घूम नहीं रहा। So this is called, the induction current, and these motors are otherwise called the induction motors. So all induction motors are run by alternating current, और ये मोटर आपको बैटरी से नहीं चल पाएगा, and that is because it is getting induction, and induction के कारण ये रोटर में जो एल्युमिनियम का जो फ्लैट बैठा हुआ है, ये दोनों एल्युमिनियम आपको इंडक्शन में मदद करेंगे और ये रोटर घूमता रहेगा। और ये आयरन कोर जो है, दैट इज यूज्ड टू रिटेन द मैग्नेटिज्म। और जो कंटेनर मैंने लाया आज के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, वो कंटेनर कॉपर का है। तो व्हाट कंटेनर्स यू कैन यूज टू टेस्ट दिस? रिमेंबर, यू कैन यूज गोल्ड कंटेनर, अगर आपका घर में है तो टेस्ट करिए। यू कैन यूज एल्युमिनियम कंटेनर, you can use copper container, you can use also silver container. So these 3 or 4 जो नॉन मैग्नेटिक है, जिनको मैग्नेट अट्रैक्शन नहीं करेगा लेकिन इंडक्शन हो जाएगा, वो 4-5 कंटेनर का नाम मैंने बता दिया। इसमें से अगर आपको टेस्ट करना है तो कोई भी एक कंटेनर लेके एक बेरिंग को प्लेसमेंट करके देखिए कैसे किया है बेरिंग, ताकि हाथ में घुमाने से भी वो आराम से घूम जाना चाहिए। So that bearing along with a rod and then another bent glass tube to house this rod आप तैयार कर लीजिए और अपना एरिया में डेमोन्स्ट्रेशन में लगे जाइए। और ये सबके अंदर एक खुलासा करेगा कि इंडक्शन मोटर का ऑपरेशन प्रिंसिपल क्या है, जो मैंने आज आपको समझाया। और वीडियो को बाद में भी देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है। और कॉइल असेंबली के बारे में वी विल हैव अनदर प्रोग्राम कि कॉइल कितना कनेक्शन है, क्या है, वो बहुत खोलना पड़ेगा सारे चीज़ को, जो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है यहाँ पर। बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हैव ए सिंपल फैन। ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मोटर है। और जो टेबल फैन है उसमें 4 कॉइल है, इसमें 8 कॉइल है। ये 200 वाट का है और ज़्यादा पावर एनर्जी खर्चा करता है। और जो टेबल फैन है वो 60 वाट का है और हार्डली 80 वाट का है। सो इसके बारे में आज जो जानकारी मैंने आपको साझा किया, उम्मीद है आपको अच्छा लगता होगा। और जाने से पहले आप लोग को ये रिक्वेस्ट है, थोड़ा-सा सपोर्ट कर दीजिए। अगर मतलब कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिख दीजिए, ताकि हम बाद में देखते हैं कि इसको और बढ़िया कैसे किया जाए। आगे विल बी हैविंग ए बेस्ट टू बेस्ट प्रोग्राम फॉर ऑल माय व्यूअर्स। और आज का क्विज़ है, क्वेश्चन है, देखिए नोट कर लीजिए। क्विज़ का आंसर अगर आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो रखिए दिमाग में। बट क्विज़ इज़ लाइक दिस: व्हाई विल बी दिस मोटर नॉट ऑपरेटिंग ऑन बैटरी करंट? ये क्वेश्चन का आंसर आप थोड़ा सोच लीजिए। ऐसा मोटर आपको बैटरी में क्यों ऑपरेट कर नहीं सकते हैं? और दूसरा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया है लेकिन आपको याद में रखना चाहिए, इसको घुमाने के लिए जो करंट का इस्तेमाल हम करते हैं, वो करंट का क्या नाम है? और क्लू भी दे देता हूँ। ऑप्शन 1 डायरेक्ट करंट, ऑप्शन 2 अल्टरनेटिंग करंट। ये दोनों में से कौन सा करंट
इस टाइप के मोटर को घुमाने के लिए साबित होता है, सही साबित होता है। सो थैंक यू ऑल। I hope you have enjoyed short duration half an hour program, and we will meet again as for fresh announcement with new topics selected by me after suitable materials are collected in my level. So thank you all. See you again.